Hello, welcome back to this physics video. In today's video, we are going to learn how to derive the relationship among various physical quantities with the help of dimensional analysis. So over here, that we are going to derive expression for physical quantities by using of this homogeneity principle. By using homogeneity principle. Now, what was this homogeneity principle? So already it is said over there that the equation will be dimensionally correct if left hand dimensions were equal to that of right hand dimension of the equation. Okay, so that equation will be dimensionally correct. Okay, so let us take the help of this homogeneity principle to derive the expression. Now with the example I want to proceed over here. Let us to take the example over here. Okay, so whenever you have to find out any derivation, so any expression, that time you will be provided the data that on which factor it is going to depend. ठीक है, जब भी आपने कोई एक्सप्रेशन डिराइव करना है तो आपको ये बताया जाएगा कि ये जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है ये कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, सो लेट अस टू लुक ओवर हियर. आई एम हैविंग दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, तो जो मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स इसको स्मॉल एफ या फिर कैपिटल एफ से मैं नोट करने वाला हूँ. व्हाट इज दिस? इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, सो ओवर हियर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है. सो दिस विल बी प्रोवाइडेड टू अस. सो आई एम टेकिंग ओवर हियर दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो जो भी जिस भी क्वांटिटी के ऊपर ये डिपेंड करने वाली है, ठीक है, तो वो प्रोपोर्शनलिटी में आपने लेना है. दैट यू नीड टू टेक इन प्रोपोर्शनलिटी. तो ओवर हियर दिस फोर्स इज गोइंग टू डिपेंड ऑन मास. ठीक है, but how much is the power of this mass we don't know, therefore from your side you can consider let it be a. ठीक है, तो मास की कितनी पावर है इसमें, सो वी हैव कंसिडर्ड इट इज एज ए. एंड देयर आफ्टर इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन स्पीड, but how much is the power of the speed, so this is not known to us, so therefore it is b. And after of it is going to depend on that radius of the circular path. So therefore its power is c over here. Okay, so therefore we come to know over here that this centripetal force, it is going to depend on mass, velocity, and that radius of the circular path. So whatever the depending factors which were over here, so we have written them with the proportionality sign. Now if I will remove this proportionality sign, then I will use a constant over here, and this constant let it be k, and rest terms as m की power a, v की power b, and r की power c. Okay, now over here that this k it is what, it is constant of proportionality, but according to that dimensional analysis, this k it is dimensionless. Okay, so no need to write any dimension for this k, you can leave it at the end of at the end. So therefore now over here what is said by homogeneity principle, left hand dimension must be equal to right hand dimension. What will be the dimension of force? तो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास है, इट इज एम एल टी माइनस ऑफ 2. दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स. एंड ओवर देयर के हमारे पास नो नीड टू राइट इट्स डायमेंशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कंसिडर्ड एज डायमेंशनलेस क्वांटिटी इन दिस डायमेंशनल एनालिसिस. तो हमारे पास मास है, मास के क्या हो जाएंगे, तो मास का डायमेंशन है m, बट इट्स पावर इज हाउ मच इन दिस गिवन रिलेशन, इट इज a. नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या बनता है, एल टी माइनस ऑफ 1, बट इट्स पावर इज b. ठीक है, वेलोसिटी की पावर क्या है, b. हमने डायमेंशन फार्मूला लिखा. r इट इज द रेडियस, रेडियस मतलब कि लेंथ की बात होती है, तो इसकी पावर कितनी है, c है. ठीक है, सो नाउ ओवर हियर कलेक्ट ऑल द वैल्यूज ऑफ दैट m इन द राइट साइड. ठीक है, तो यस में क्या करो, जितने भी m है और राइट साइड के उनको कलेक्ट कर लो, बिकॉज ऑल आर गोइंग टू मल्टीप्लाई हेयर. ठीक है, सो ओवर हेयर वी गेट दैट देयर इज ओनली 1 m, तो इसलिए ये बन गया m की पावर a. नाउ द नेक्स्ट यू नीड टू कलेक्ट ऑल द l
to the right side. तो जितने भी L हैं यहाँ पर, so here you will find that this L t minus 1 its whole power is what b. ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास इस तरह से कुछ बात बन रही है ए बी का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर. सिंपली वी कैन डू दिस वन. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो L की पावर है हाउ मच इज दैट वन, तो इसमें L की पावर है b एंड ओवर हेयर L की पावर इज c. तो दोनों मल्टीप्लायर में बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो b प्लस c बन जाएगा. नेक्स्ट इज देयर इज नो अदर L इन दिस राइट साइड. नेक्स्ट इज दैट ऑफ t की पावर. नाउ सी दैट देयर इज ओनली वन t ओवर हेयर, इट्स पावर इज -1 बट होल पावर इज b. ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा पावर का पावर यानी कि दिस पावर विल मल्टीप्लाई, सो इट इज t की पावर माइनस ऑफ b. सो दिस इज इक्वल टू m l t माइनस ऑफ 2. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू नीड टू डू ओवर हेयर. जब आपने ये सारे इस राइट साइड को भी एम एल टी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है, लेफ्ट साइड भी हमारे पास एम एल टी है, सो देयर आफ्टर यू कंपेयर द पावर. ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू ओवर हेयर कंपेयर द पावर्स. ठीक है, तो जो हमारे पास लेफ़्ट साइड जो हाँ जितने जो m है उसकी पावर को अपने राइट साइड जो मास की डायमेंशन है उसके साथ कंपेयर करना है. लेंथ के जो डायमेंशन है लेफ़्ट साइड वो राइट साइड के साथ कंपेयर करने हैं और टाइम के राइट साइड के साथ कंपेयर करने हैं. ठीक है, तो हमारे पास लुकअप ओवर है. लेफ़्ट साइड में मास का डायमेंशन क्या है, इट इज़ 1. डायमेंशन मीन्स इसकी पावर कितनी है 1 है. ठीक है, लेकिन राइट साइड में कितनी है, तो यहाँ पर हमारे पास राइट साइड में है ओनली a. नेक्स्ट इज देयर लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन लेफ्ट साइड कितना है 1, लेकिन राइट साइड में कितना है इट इज़ b प्लस सी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लेफ्ट साइड में टाइम का डायमेंशन कितना है -2 और राइट साइड में कितना है इट इज़ माइनस ऑफ b. ठीक है, तो विद देयर साइन वी आर गोइंग टू राइट. ठीक है, सो नाउ ओवर हेयर a वैल्यू इज़ नोन टू अस, a की वैल्यू हमारे पास आ गई और हमारे पास b की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लोगे, यानी कि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू क्या आ गई +2 आ गई. ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज c की वैल्यू क्या होगी, तो c की वैल्यू होगी हमारे पास 1 माइनस b, यानी कि यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो पुट ओवर हेयर एंड वी गेट दैट इट इज़ -1. तो c की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई. ठीक है, सो नाउ over here a b and c we got that one, and what were a b c, we have taken that the powers of those physical quantity on which force was going to depend. ठीक है, so you can make this one as your equation number 1. इसको आप अपनी equation number 1 कर दो, जहाँ पर आपने proportionality को हटा करके क्या किया था constant लगाया था. ठीक है, so make it your equation number 1. now put the value of abc in this equation number 1. Put in equation first, so thus we will get this one as, thus we were having, this was that first equation, f equal k into m का dimension a, v की power v and that of r की power c. So therefore f is equal to k, let it be mass, its value is going to be we have calculated as 1, and that of v it is 2, and that of r its value is -1, or either we can write it as k m v square r -1. so it is the negative power, it means this can be taken to the denominator, so its sign will change, so it is mv square over r. In some of the cases if you are known with the value of this k, then you can put this value at the last, otherwise let it only up to here. Okay, so this is your relation, otherwise over here this k value is constant for this given that expression, so thus we can have it is mv square by r. Okay, so thus we got over here, this is that the way how we can derive this relation of the various physical quantities with the help of that dimensional analysis. Now there I'm going to give a question. So here it is said that this is the question as a homework, that we are having escape velocity. So what is escape velocity?
So this is that velocity with which if we are going to throw anything, so that will go out of the earth atmosphere. ठीक है, मतलब कि ऐसी वेलोसिटी जिससे हम किसी भी चीज़ को अगर ऊपर की तरफ फेंके तो वो कभी वापस ना आए, ठीक है, तो उस वेलोसिटी को बोला एस्केप, ठीक है। सो ओवर देयर इट इज सेड टू अस कि जो एस्केप वेलोसिटी है इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट हाउ मच इज द पावर वी डोंट नो of this acceleration due to gravity. Next, it is going to depend on radius of the earth, but how much is that radius of the earth we don't know about. Okay, so therefore you need to derive this relationship where it is acceleration due to gravity, while this r it is the radius of the earth. Okay, so this is your work. You have to derive this relationship and comment it. Thank you for watching.